Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon to all of you. Yes. So today टेन हो गए ना आपने? Yes. So today we will see physical diseases of psychosis. कल हमने physical diseases of SORA देखा, all inflammatory diseases, all itis वाले जितने भी diseases होते हैं, all inflammatory disease of each and every organ and system of our body comes into SORA. Yes. And today we will see the psychotic diseases of psychosis. So this is chapter number 11 from the book, The Theory or the End of My Assumptions of Miasm. So in chapter number 11, Dr. Praful Vijayakar states pathogenesis of psychosis. Pathogenesis of psychosis. So what is the pathogenesis of psychosis? The main theme is multiplication of the cells. So multiplication in every organs, tissues, systems, that is called the psychosis. So when this depends, that is in the form of multiplication of cells occur. So SORA incorporates primary response to cell injury. So SORA, it is a primary response. When this primary response become failed, body become failed to defend himself, then the cells of the body goes into the second gear. That is the second defense mechanism, and that second defense mechanism is the structural change, that is the multiplication of the cells. Constructive defense. So यहाँ पे construction होगा. So cell injury by sacrificing nutrition and oxygenation, this is SORA. That is the first basic function of living cell or organism. Psychosis is secondary response to cell injury brought about by using or sacrificing second function of generation or reproduction. So this is the second response or second defense mechanism of the body. We know that generation or reproduction in a cell occurs due to many processes. For cell division, there is a process called mitosis. This is normal thing, natural thing. Mitosis, that is 1:2. This process of division is so perfect and so meticulous that a cell can give birth to two of its own kind. एक ही सेल के दो सेल होते हैं. This is mitosis. This is but natural process. So that means the cell divides in ratio of 1:2. So except in cases of mitosis, now the secondary defense response sacrifice this second function of cell. तो जहां ये second function sacrifice होगा, mitosis sacrifice होगी, 1:2 dividation of cell ratio becomes sacrificed.
then it becomes 1:3, 1:4. That is the multiplication of cell. This is abnormal, and this is called the psychosis. So this means something to go wrong with the generation, production, or reproduction. That is 1:2. If the reproduction ratio of 1:2 is changed, it could be towards either more or less. More, it gives rise to psychosis excess, and the less gives rise to psychosis less. So the cell can thus start multiplying in ratio of 1 as to more than 2. That is 1:3, 1:4, etc. So the cell can thus start multiplying in ratio of 1:2 less than 2 or more than 2. So the first can be psychosis excess, the second can be the psychosis less. Hence, psychosis can be expressed in all ways and in all systems and tissues in two forms of excess and less. The diseases or the pathological states, both on physical as well as mental level, will be expressed as excess or less. So this is the second defense mechanism or the pathogenesis of psychosis. So psychosis excess at cellular level and hormonal level, humoral level, is the cell size itself can be bigger than normal, is hypertrophy. Construction may be due to increase in the number of cells, is hyperplasia. So this is hypertrophy and hyperplasia. It is psychosis excess. Cell can be divided into more than 2 nucleus cells, resulting into warts, excrescences, skin tags, polyps, etc. Size of part or organ bigger than normal is the psychosis excess at cellular or nucleus level. Then cell wall in blood, if it become excess, so the lipid excess, then hypercholesteremia, hyperlipidemia, hypertriglyceridemia. These are the psychosis excess diseases. Then protein become excess, then hyperproteinemia, ketosis, or hyperalbuminemia. Then carbohydrates become excess, gives rise to diabetes. Cell cytoplasm water become excess, then swelling, edema, retention of water, ascites, anasarca, cyst, turgidity, blisters, and vesicles are all comes under the psychosis excess. And when the natrum becomes in excess, then hypernatremia. Potassium become excess, hyperkalemia. Calcium, hypercalcemia. Uric acid when become excess in blood, then it gives rise to gout. Ketone bodies and ketosis. When the ketone body and ketone body become excess, it gives rise to ketosis. Fibrin, yes, when the fibrin become excess, it gives rise to hardness, fibrosis, indurations, atherosclerosis. And when elastin become excess, then constriction, stricture, and stenosis. तो देखो फाइब्रिन एंड इलास्टिन के एक्सेस होने से क्या होगा, देन यही फाइब्रिन और इलास्टिन लेस होने से क्या होगा, ये डिजीजेस ध्यान में रखना, क्योंकि फाइब्रिन एक्सेस से हार्डनेस आएगा ऑलवेज, और जहां जहां हार्डनेस होता है दैट पार्ट बिकम मोर ब्रिटल, है ना, कभी भी टूट सकता है. सो इसीलिए क्रैक्स आना, फ्रैक्चर्स होना, ये खाली
जो एक्सेस पार्ट है दैट इज एक्सेस फाइब्रोसिस में ही होगा. यस, सो fibrin become excess hardness, fibrosis, induration, and atherosclerosis. Elastin become excess, then constriction, stricture, and stenosis. Yes. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिशर है, तो फिशर में इलास्टिन एक्सेस और लेस. इलास्टिन एक्सेस, then spinal cord stricture, stenosis, then stricture in the urethra. These are all the types of elastin excess disease is psychosis excess. Now, deposition or accumulation may be due to excess generation of like calcium, so hypercalcemia or hypercalcification, calcium oxalate, stones, renal calculus, gallbladder calculus, salivary gland calculus, etc. When calcium become excess, tartar or tip, and phlebolytics. When melanocytes excess secretion, then hypermelanosis, hyperpigmentation on skin, black discoloration of skin or melanocytosis, etc. Brown pigments, lipofuscin, when secreted in excess form, then brown spots or liver spots on the skin. Then iron, when iron deposition become excess, then hemosiderosis. Now in bones, if the bone growth increases, osteophytes, calcaneus spur, and osteomas, tumor of bones. Blood vessel, hemangiomas, varicoses, angiomas, aneurysm, and hemorrhoids. So these are the diseases of blood vessels in psychosis. Uterus, cyst, fibroids, polyps, endometriosis. This is the psychosis excess diseases. In skin, like warts, corns, cellulitis, callositis, excrescences, warts, fungal nematodes, ringworm, thickened ulcerative margins, etc. These are psychotic in nature. So any tumor or growth anywhere in the body, for example, brain, stomach, lungs, liver, kidneys, even extra flaps at lower end of uterus called post-urethral walls. So these are all the psychotic diseases of the different parts of the body. Now, physical constitution, psychotic physical constitution किस टाइप का होगा? तो overall large build, large robust build, long bones, sturdy bones, well-developed cheeks and face bones, well-developed bony prominences are due to psychosis excess. Chubby cheeks, round face, round cheeks is the psychotic face. So this is the psychotic pathogenesis or psychotic defense mechanism of the body. Gives rise to psychotic diseases. Yes. Now the psychosis less. तो less में सब hypo में जाएगा. Yes. So size becomes smaller. Lipids less secretion. Proteins less secretion, that is hypoproteinemia. Decreased globulin, albumin, glucose, hypoglycemia, fibrin less,
अब देखो फाइब्रिन एक्सेस के डिजीजेस और फाइब्रिन लेस के डिजीजेस। तो लेस में क्या होगा, इफ द फाइब्रिन सिक्रेशन बिकम लेस, देन लेस ऑफ फाइब्रिन टू मसल्स, मसल बिकम एकदम वीक, टिश्यूज विल गिव्स राइज टू लेस हार्डनेस, स्मूथ मसल रहेंगे एंड मोर सॉफ्टनेस। This could result in dilatation of heart and other organs. When the heart size become enlarged, that is, we can say it is the dilatation of heart, and this occur when the fibrin become less. And now elastin become less, then less of elastin can cause lack of elasticity. इलास्टिन एक्सेस है तो पार्ट में इलास्टिसिटी बहुत रहेगी, और इलास्टिन लेस सिक्रीशन हो रहा तो लैक ऑफ इलास्टिसिटी रिजल्टिंग इन लूजनेस, रिलैक्सनेस ऑफ टिश्यू। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों में नेक होल्डिंग नहीं है ना, पैर पकड़ नहीं रहा, पेशेंट जल्दी बैठ नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा है, दिस इज द लेस इलास्टिन सिक्रीशन, कॉज रिलैक्सिटी और रिलैक्सेशन ऑफ टिश्यूज, मसल्स एंड बॉडी। तो इस पर से हम निकाल सकते हैं कि क्या हुआ होगा, वाई द, सपोज कि कोई इन्फेंट है या फिर कोई बच्चा है जो नेक होल्डिंग हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इजीली, मतलब केस टेकिंग इज अंडर, ये जो सर ने यहाँ दिया इसके अंडरस्टैंडिंग से केस टेकिंग कितनी इजी हो जाती है कि अगर कोई बच्चा आया और मेंटल रिटार्डेड है, नेक होल्डिंग नहीं है, तो ऐसे बच्चे में नेक होल्डिंग आनी चाहिए फास्ट। तो ये नेक होल्डिंग क्यों नहीं हो रहा, मतलब मसल्स ऑफ नेक बिकम वीक और स्मूथ, इलास्टिसिटी बिकम लेस। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इलास्टिसिटी वहां की लेस हो गई? तो क्या रीजन होता है नेक होल्डिंग के लिए? यस, एनीवन? नेक होल्डिंग के लिए क्या रीजन होता है, क्यों नेक होल्डिंग नहीं होती? इंसल्ट, मदर की इंसल्ट। So voluntary muscles, voluntary. ये It's a motor development, voluntary. This muscular development, motor development. वो तो पैथोलॉजी में, हम पैथोलॉजी के भी कई गुना आगे पहुंच चुके हैं। अपमान हुई क्यों मदर ऐसा हुआ? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टीम गया है सर। स्टीम गया जी सर। मतलब क्या? सर ड्युरिंग प्रेग्नन्सी मदरला खूप अपमानित झालं असेल, अपमान झाला માનહાનિ असेल. માનહાનિ હ્યુમિલેટેડ હોય છે, ઇન્સલ્ટેડ હોય છે. मदरची मानहानी झाली त्यामुळे मुलामध्ये ती जीवित झाली. यस, मतलब बच्चे का हेड और नेक जब ऐसे रहता है ना, ऐसे किधर भी आप करो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, पीछे जाएगा, लेकिन ऐसे टाइट नहीं रहेगा, राइट? तो ये कब होगा? मदर के साथ क्या हुआ, मदर के थॉट्स क्या थे, क्या हो सकता है मदर के साथ जब उसके थ्रू ये मैसेज बच्चे को गया कि मुझे टाइट गर्दन से जीना ही नहीं है, और या फिर जीने को ही नहीं मिल रहा है ना, मतलब मेरा तो हर बार मुझे गर्दन बार बार झुकानी ही पड़ती, मेरी कोई सुनता ही नहीं।
है ना। मुझे चांस ही नहीं मिलता कि मैं भी अपनी कॉलर टाइट कर सकूं, किसी के सामने गर्दन उठा सको। उठा सकूं, गर्दन उठा के बात कर सकूं, मेरी तो कुछ चलती ही नहीं है। बार बार मुझे गर्दन झुकानी पड़ती है, मतलब मेरी मान हानि होती है, बार बार मेरी मान हानि होती है। तो ये इमोशंस होते हैं। नेक होल्डिंग अगर बच्चे में नहीं है तो फिर वो सब इवेंट्स आपको लेना है। नेक तो बन चुकी है, अब ये जो इवेंट्स हुए हैं ये कौन से महीने के हमें कंसिडर करना है, कौन से महीने से हमें वो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाए। आफ्टर 4th month। आफ्टर 6 मंथ, अच्छा अच्छा। 6 मंथ के बाद की हिस्ट्री, क्योंकि 6 मंथ तक तो मतलब नेक होल डेवलप हो चुकी होती है ना, फुल्ली डेवलप अच्छा, होती है। अभी खाली फंक्शन बाकी है, और फंक्शन के लिए चाहिए इलास्टिन। जब इलास्टिन सिक्रेशन बॉडी में होगा, इलास्टिन डिपोजिशन होगा, तब इलास्टिसिटी नेक मसल्स में आएंगे। और वो हुआ नहीं, मतलब डिफॉल्ट वो जीन्स में चले गया जो डिपोजिशन करता है इलास्टिन का, राइट। तो वो प्रॉब्लम आया, इसलिए नेक होल्डिंग बच्चे में नहीं आया, राइट। यस। तो और इलास्टिन लेस होने से क्या क्या हो सकता है, तो जहां जहां मसल स्ट्रेंथ वीक पड़ गई, तो मसल स्ट्रेंथ वीक होने से जो जो डिजीजेस होंगे वो सब में इलास्टिन लेस होगा। फॉर एग्जांपल हार्निया सर। hernias, yes, and प्रोलैप्स। prolapse, very nice, Very nice। prolapse of uterus, prolapse of rectum, है ना। yes, hernia, hiatus hernia, etc., umbilical hernia, all types of hernias. So muscles, sorry, causing prolapse, ptosis, paralysis, ptosis of eyelids, visceraptosis, then prolapse of heart walls, prolapse of uterus, hernia, prolapse of rectum, varicose vein, and hemorrhoids. All are due to elastin less. Then calcium become less, so hypocalcemia, osteoporosis, and melanin become less. Then reduced melanin may give rise to hypopigmentation, etc. So osteoporosis, it is due to calcium less deposition. Then टेनिया वेसिकलर, यस, जो हम जिसे हम क्या बोलते हैं, टीनिया वर्सिकलर, शिरनी शिरनी शर्नी, यस। इट इज नॉट ल्यूकोडर्मा, इट इज शर्नी ओनली, व्हाइटिश होता है लेकिन it is tinea versicolor. Then iron become less, than anemia. So these are the psychotic less diseases. Now the physical structure of psychosis less person. Overall small build, dwarf people, है ना। So build of people, short fingers, short bones, short shoulders, underdeveloped organs, and parts of the psychosis less. So in general, face of psychosis constitution has rounded counters, fat, flabby, excess of flesh or prominent bones, squarish or rounded shape, large nose in psychosis excess, small nose in psychosis less. So this is the excess psychosis and less psychosis. So psychosis पैथोजेनेसिस आपके समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12। सो साइकोसिस में आपको किसी को कुछ क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। यस, सर गुड आफ्टरनून. गुड हॅलो आफ्टरनून। सर. सर 83 पेजवर दिले आहे की सायकोसिस एक्सेस और लेस ॲट द मेंटल लेवल. तर हाऊ कॅन एक्सप्लेन इट? 83 पेज, Actually, 83 पेज
माझ्याकडे जे बुक आहे त्याच्यामध्ये 83 मध्ये आहे. साइकोसिस लेस एंड साइकोसिस एक्सेस एट मेंटल लेवल, हाँ यस सर. राइट. सो आप बोलो, अगर जिसमें साइकोसिस एक्सेस है वो मेंटल लेवल पे पर्सन कैसा होगा? जो भी इमोशंस है वो कैसे रहेंगे? सब इन एक्सेस, राइट. जैसे एंगर है तो एक्सेस एंगर, फियर है तो एक्सेस फियर, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल. देन एबंडेंस रहेगा, एबंडेंस है ना. स्क्वेंडर्स रहेगा कि थोड़ा सा खर्चा करना है तो बहुत सारा खर्चा. अवेरिस रहेगा पर्सन, बहुत सारा पैसा चाहिए. और वही लेस में कंजूस, माइजर, टिमिड है ना. नैरो माइंड जिसे हम बोलते हैं, नैरो थिंकिंग है ना, किसी को कुछ नहीं देना, राइट. कर्सिंग, यहाँ पे इधर ब्लेसिंग रहेगा तो उधर कर्सिंग रहेगा. तो इस तरह से इमोशंस रहेंगे. जो भी इमोशंस एक्सेस में थे वो इधर टोटल इमोशन लेस हो जाएंगे. यस. So this is the at the mental level, right? थैंक यू. और कोई क्वेश्चन, या should I start the chapter 12? सर आपने उस दिन बताए थे कि मलेरियल फीवर जैसे होता है तो वो सोरिक माइजम रहता है, क्योंकि वो डिपेंड रहता है सर दूसरों के ऊपर. और जो Coric ने फंगल साइकोसिस बोला था. और जो फंगल इन्फेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं सर? कौन सा माइजम बोलेंगे? All fungals are parasite, so that is psychosis. अच्छा सर, ओके सर. Okay. So chapter number 12. देखो ये हमने सोरिक डिजीजेस देखे, फिजिकल डिजीज ऑफ सोरा देखे, फिजिकल डिजीज ऑफ साइकोसिस देखे, पैथोजेनेसिस ऑफ सोरा देखे, पैथोजेनेसिस ऑफ साइकोसिस देखे. नाउ द पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस, फिजिकल डिजीजेस ऑफ सिफिलिस. अब आप ये सोच सकते हैं कि फिजिकल डिजीजेस ऑफ साइकोसिस में हर डिजीज कैसे होगा? डिस्ट्रक्शन. सोरा में हर डिजीजेस इन्फ्लामेशन, साइकोसिस में हर डिजीजेस एक तो एक्सेस कंस्ट्रक्शन या फिर लेस कंस्ट्रक्शन. एंड फिजिकल डिजीजेस ऑफ सिफिलिस में कि जहां कहीं डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन. अब डिस्ट्रक्शन होगा या फिर डिस्टॉर्शन होगा, है ना, राइट. So pathogenesis of syphilis or destructive diseases at the physical level, when a cell cannot cope up, when a cell cannot cope up with the invading organism, pathogen or toxin by using physiologic defense or constructive defense, it decides in despair to adopt do or die attitude. है ना. जब सिफिलिस आ जाता है तो हम बोलते हैं कि अब ये अपनी पे आ गया, और अपनी पे आना दैट इज डू और डाई एटीट्यूड. अब जियो या फिर मरो, ये लास्ट पर्याय है. अब इसके सिवा कोई पर्याय नहीं है ना, क्योंकि सामने वाला जीने ही नहीं दे रहा. उसे समझा के देखा, उसे धमका के देखा, अब मारने के सिवा कोई पर्याय नहीं. इट इज द सिफिलिटिक डिफेंस. सो do or die attitude of the 100 trillion cells, every cell, as the textbook of pathology teach us,
lives and works to maintain biological equilibrium inside the human being. If the equilibrium is maintained, that is, the homeostasis is maintained, the whole being remains healthy. This means every cell has concern for the whole being. It is generally a selfless service of a part to the whole. When the whole being is under attack, it may decide to sacrifice itself to save the whole. Thus, a cell or tissue or a part of the human being may be distorted, disfigured, or even degenerated. So these are the form of syphilis: distortion, disfigure, and degeneration or destruction. If required to save the whole human being. और ये किस लिए होगा? डिस्टॉर्शन, डिसफिगर एंड डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन, ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ये बॉडी को सेफ रखने के लिए हो रहा है, इसीलिए इट सेव द होल ह्यूमन बीइंग, and that's why it is called the defense mechanism. So the degeneration or destruction is by two means: necrosis and apolysis or apoptosis. तो two types का destruction होगा, एक तो necrosis, दूसरा apoptosis or apolysis. So necrosis, or that is a direct destruction. So necrosis is a process by which the body discards the disease part. Discard the disease part. मतलब जिस part में necrosis हुआ, body always try to cut off that part to save the whole body. So the disease part can be dangerous to the body in future. This is brought about by either karyolysis, coagulative necrosis, liquefactive necrosis, or fat necrosis, etc. Yes. तो यहाँ पे नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस में कन्वर्ट इनटू गैंग्रीन, और गैंग्रीनस पार्ट बॉडी ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देती है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म है, इसीलिए बॉडी इस तरह से बिहेव करेगी। और इसके पीछे का मेन रीजन होता है टू सेव द होल बॉडी, एक पार्ट को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देना। So disease symptoms encountered in syphilis necrosis like disfigurement, gangrene, distortion of parts of body, ulcerations, lacerations, bleeding, sensitivity out of all proportions, deep bleeding cracks, bleeding distorted ulcers, distorted healing wounds, etc. Yes. So this is the syphilis destruction necrosis. Now apolysis or apoptosis, this is a process. अब देखो necrosis fast होता है, apolysis slow होता है. So this is the process by which the different parts of the body undergo programmed destruction of cell. इसीलिए इसे autoimmune disease कहते हैं. The death of a cell is due to activation of internally controlled suicide program. Doomed cells are removed with minimum disruption to the surrounding tissue. ये जो होता है ये ये जो होता है well controlled internal controlled suicide program. So बहुत अच्छी तरह से इसे बनाया गया होता है कि धीरे 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 बॉडी को अंदर से मारते आओ, जलाते आओ, डिस्ट्रक्ट करते आओ. So disease encounter in this type all are autoimmune disease like rheumatoid arthritis, motor neuron disease, etc. So
जो मोटर न्यूरॉन डिजीजेस है, it comes into, or rheumatoid arthritis, it comes into autoimmune disorders, and autoimmune disorders, it is a cell program, self-suicidal program comes into apoptosis. So here, the gun of destruction is pointed towards cell. होम्योपैथिक कंसिडरेशन, अब नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता है, नेक्रोसिस में ओनली सिंगल पार्ट रिमूव होगा, लेकिन एपोप्टोसिस में होल बॉडी. So homeopathic consideration, it is obvious that constitutions that have a tendency to destroy cell will suffer in the long run from autoimmune diseases, and those that are violent not on cell but on the outside will suffer from other destructive diseases. Remedies that are self-destructive are the ones that think about suicide seriously, like Aurum. So others like fluoric acid, who never self-destructed but lead to external destruction, will be useful in causes in cases of other destructive pathologies. Yes. So Aurum, it is autoimmune disorders, and the fluoric acid, it is destruction of other parts. So, for example, nose usina carries of cartilage. Ulcers in mouth, stomach, duodenum, colon, rectum, these are all syphilitic diseases, destructive diseases. So chronic or acute renal failure, infarct in heart, atelectasis of lungs, intestinal fibrosis, emphysema, cancers, cancerous ulcers, autoimmune disease, etc., rheumatoid arthritis, autoimmune thyroiditis, that is Hashimoto's disease, gangrene, motor neuron disease, Parkinson disease, cerebral paralysis, all these are syphilitic diseases, destructive diseases. So the syphilitic phase, yes, now the phase of syphilis, syphilitic patient का face, so face that has something which repels you, which is repels you. तो ये कैसा कि आप जैसे सिपिलिटिक फेस के ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसा, अरे क्या देख लिया. This is repels you, that something that is just not normal, so abnormal, out of normal, sharp, very, very sharp. So it may be ugly, distorted, repulsive. You. The nose and the eyes can be extra sharp, like a dagger. Yes. So this is the syphilitic face. Yes. So this is syphilis. Now हमारे तीनों भी चैप्टर फिनिश हुए, फिजिकल डिजीज ऑफ माइजम्स, सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिस. So diseases of सोरा, diseases of psychosis and diseases of syphilis. तो हमने फिजिकल लेवल पे माइजम पूरा कवर कर लिया है, पूरा सीख लिया. नाउ वी एंटर इन द बॉडी. सो कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, माइजम डिफेंस एंड जेनेटिक्स. माइजम एट जेनेटिक लेवल, माइजम इन जीन्स. यस. तो अभी तक के चैप्टर्स पे अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम 5 मिनट लेंगे. ओके. यस. सर अम्बिलिकल हर्नियाचं काय कॉन्फ्लिक्ट असू शकतो? थोड़ा साउंड बड़ा कीजिए. अम्बिलिकल हर्निया का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा सर? अम्बिलिकल हर्निया, इसका कॉन्फ्लिक्ट एक ही रहेगा, जैसे कि कोई भी हर्निया है, नॉट ओनली अम्बिलिकल, कोई भी हर्निया जिसमें इलास्टिन लेस हो रहा, मतलब लूजनेस आ रहा मसल्स में. तो मसल्स में लूजनेस क्यों आ रहा, क्या होगा, क्यों? उस पर्सन को स्ट्रेंथ नहीं चाहिए. यस.
और अम्बिलिकल हर्निया में हम ये लॉजिक वहां लगा सकते हैं कि उस बच्चे को मदर की तरफ से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, क्योंकि इट इज मोर रिलेटेड टू मदर अम्बिलिकस, है ना। सो मदर की तरफ से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही बच्चे को, तो वहां पे हर्निया हो गया। yes. लेकिन अदर हर्नियाज में, जैसे कि कोई राइट साइडेड हर्निया है तो फादर की तरफ से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, और अगर लेफ्ट साइडेड हर्नियाज है तो मदर की तरफ से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। यस सर लेकिन ये जो है ना हर्निया, तो अभी एक लेडीज में है सर। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको 2 साल से है। आप देखो मोस्टली केसेस बच्चों में होते हैं, इन्फेंट्स में होते हैं, आफ्टर द कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। तो कॉर्ड हील हो जाता है, कट होने के बाद अम्बिलिकस हील्ड हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे अम्बिलिकस हर्निया डेवलप होता है। मोस्टली इन्फेंट्स में कॉमन है, बाकी ओल्ड एज में, एडल्ट एज में ये उन केसेस में होता है जहां पर कुछ सर्जिकल केसेस हुए हैं, मतलब सर्जिकल इंटरफेरेंस हुआ है, तब जाके अम्बिलिकल हर्निया हो गया। तो इसके पीछे इमोशनल अटैचमेंट या फिर इमोशनल पॉजिटिव फैक्टर यही रहेगा कि स्ट्रेंथ कहीं तभी कम पड़ रही है, स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, या फिर स्ट्रेंथ के साथ वो मतलब इंटरनली वीक होते जा रहा है, जिसकी वजह से वो फेस नहीं करते पा रहा स्ट्रेंथफुली। लेकिन सर टीमिड, लैक ऑफ करेज, ये सब रूब्रिक्स उसमें आएंगे। लेकिन सर अगर एज अम्बिलिकल हार्निया जिसको हुआ है उसका एज हो तो क्या अंदाजा लगाएंगे सर? मदर का स्ट्रेंथ का बात तो नहीं है, अभी तो 40 साल हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने बोला है ना, सर्जिकल इंटरफियरेंस कुछ तभी हुआ है, और उसमें पेशेंट ने हेल्पलेस फील किया, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो बहुत जो डर लगा। हाँ मैंने केस देखा है सर। अभी उसको आराम नहीं है। 20 साल पहले उसका सर्जिकल अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, वो भी अपेंडिसाइटिस नहीं था, ऐसे ही उन लोगों ने कर दिया ऑपरेशन। लेकिन अभी 20 साल पहले का केस है जो ऑपरेशन हुआ था। अभी लगभग 6 महीने पहले उसको अम्बिलिकल हार्निया हो गया, उम्र 40 साल है। हम्म तो देखो ना, 40 साल में अगर हो रहा है तो एब्डोमेन, अगर अम्बिलिकल हर्निया हो रहा है तो एब्डोमेन, अम्बिलिकस के पीछे क्या है, पूरे इंटेस्टाइन है ना, जी जी एब्डोमिनल जी। जीआईटी ऑर्गन्स टोटल, और जीआईटी ऑर्गन्स रिलेटेड टू फैमिली। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को फैमिली से, बच्चों से, वाइफ से, पेरेंट्स से हेल्प नहीं मिल रही, स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, है ना। तो मोस्टली देखो इन केसेस में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, फील्स हेल्पलेस, है ना, कोई करने को नहीं है, फियर ऑफ फ्यूचर, फैमिली में कोई जगह नहीं है, कोई पूछता नहीं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ पूरी चली गई। पावर जो अपन बोलते हैं कि मेरी पावर क्या है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं कहीं पे भी जाऊं मेरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी होती है, तो वो नहीं है, राइट। अरे भाई पढ़ हाँ रहा है कि नहीं। हाँ सर। हम्म सर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो तो भी हर्निया होता हो सकता है, इफ दैट पर्सन फील्स हेल्पलेस, बात है सर ना कि लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस। जो बच्चे की वजह से है तो उसको लेफ्ट साइड में होना चाहिए, कि हम्म फादर की वजह से राइट में होना चाहिए। बहुत लेकिन सिंपल सिंपल लॉजिक होते हैं। हम क्या बोलते हैं, मेरा राइट हैंड मेरा बच्चा है ना, मेरे बच्चे ही मेरे दो बाजू हैं। तो ये जहां वीक हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली उस पर्सन के मसल स्ट्रेंथ वीक होते जाएगी, ये अगर नहीं मिल रहा है तो। पैरालिसिस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ हेल्पलेस फीलिंग, है ना, कि अब मुझे क्या, जो लोग इस तरह से थिंक करते हैं कि अब मेरा तो सब कुछ हो गया, अब मुझे क्या है, मेरे तो अधीन आ गए, है ना, अब मैं
काम नहीं कर सकता, मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, मेरा सब कुछ हो गया, मैंने सब कुछ देख लिया। तो इन पर्सन्स को पैरालिसिस होता है कि अब अगर कुछ करना ही नहीं तो इसकी जरूरत क्या है। अगर आपको काम करना नहीं, ऑफिस में जाना नहीं है ना, आपका सब कुछ हो गया, तो फिर इसकी जरूरत क्या है। मसल्स ऑटोमेटिकली वीक होना शुरू कर देंगे। सर किलॉइड, कुछ किलॉइड्स में देखा गया है कि उसमें पस एक्सेस फॉर्मेशन होता है फाइब्रोसिस। और पस फॉर्मेशन होता है कंटिन्यू यूजिंग। मेरे पास पेशेंट है 25 साल से यूज हो रहा है पस किलॉइड से। एक्सेस फाइब्रोसिस है, फियर फ्राइड एक्सेस। तो वो पेशेंट खुद को यानी और मेटालिक दिखाता है, स्ट्रेंथ और क्या बोलते हैं उसको, फास्टिडियस, वेरी एंग्री। तो इमोशनल पैथोलॉजीज। रियल रियल में जाओ, उसके रियल लाइफ में जाओ, ये सब दिखावा है ना। एक्सेस फाइब्रोसिस हो रहा है मतलब क्या है, साइकोसिस एक्सेस है ना, उसके पीछे कुछ अलग रियलिटी आपको मिलेगी। एंड जो हम बोलते हैं ना, सत्य हमेशा अलग होता है, डिफरेंट होता है, कड़वा होता है। और सर पस फॉर्मेशन हो सर, रहा है उसका क्या मतलब नहीं? फर्स्ट मीन्स साइकोसिस, तो ब्लड आ रहा है उसका तो सिफिलिस। नहीं नहीं, उसका उसका इमोशनल पैथोलॉजी क्या नहीं? चाइल्डहुड हिस्ट्री लेना होगा किलॉइड क्या में सर? से पस आ रहा है। हाँ, पस का मायागम साइकोसिस है। अब इमोशनल पैथोलॉजी डिपेंड करेंगी कि कहाँ से पस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या पैथोलॉजी है वहां पे, इस पे डिपेंड करेगा, कौन से ऑर्गन में है इस पे डिपेंड करेगा। मेन थीम ध्यान में रखो कि पस इट कम्स इनटू साइकोसिस। अब अगर एब्सेस हुआ है तो एंगर सप्रेस है ना। अगर पस फॉर्मेशन इन रेक्टम है, जैसे कि फिस्टुला हो गया, और पस फॉर्मेशन और यूजिंग ऑफ पस है, तो रेक्टम के लिए क्या है, कौन बोलेगा फास्ट? शिट फीलिंग। शिट फीलिंग है ना, बहुत गंदा कुछ तभी हो चुका है, बहुत गंदा फील कर रहे हैं। दैट इज द, हर इसमें अलग अलग रहेगा पस का। यस। सर पण पॅरालिसिस तर हायपरटेन्शन आणि शुगर शूटअप मुळे होतं ना. हाँ, शुगर शूटअप झाली तर काय होईल, है ना, हायपर टेन्शन झालं तर काय होईल, त्याच्यानंतर जे होईल त्याच्यानंतर पॅरालिसिस होईल, राईट. जर हायपर टेन्शन झालं तर होऊ शकते कि ब्लड हिमोरेज हो गया, ब्लड हिमोरेज मतलब ब्रेन हिमोरेज हो गया, ब्रेन हिमोरेज के बाद पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस के जो पैथोलॉजी है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, वो ओनली एक नहीं है। अगर ब्लड क्लॉट भी है या फिर कुछ ब्रेन आर्टरीज में कुछ स्टिनोसिस हुआ या फिर इंफाक्ट है तो भी पैरालिसिस होगा। हर हर इसकी पैथोलॉजी अलग अलग रहेगी। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए फ्रोजन क्या शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट का स्टिफनेस क्यों हुआ, और शोल्डर हम किसके लिए यूज करते हैं, किस इमोशनल इमोशंस के लिए सोचते हैं शोल्डर के लिए। तो शोल्डर दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई, अब हिलने डुलने को भी जगह नहीं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे, इतना भार है, इतनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कहीं मेरे मन का कर ही नहीं सकता, मैं कुछ इधर उधर भटक ही नहीं सकता, है ना। सुबह उठे कि शाम तक सोने तक मेरे ऊपर सब बर्डन होता है। ये इसकी वजह से शोल्डर स्टिफनेस आ जाता है। यस, यस रेखा, समझ में आया? सर, और सिंड्रोम सब सिंड्रोम्स का एक ही कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या हर सिंड्रोम का? जैसे जैसे सर वो गुलन-बारी सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम या कोई सब। सबके अलग अलग है,
सबके अलग अलग, जैसे सिंड्रोम अलग अलग है वैसे उसके इमोशंस अलग अलग होंगे, उसके पैथोलॉजिकल कॉजेज अलग अलग होंगे, है ना, उसके इमोशनल फैक्टर्स अलग अलग होंगे। ओके सर। यस, somebody else. सर माझ्याकडे एक पेशंट आहे. बॉय आहे 15 to 16 इयर्स. तर सर तो नेहमी काय करतो, म्हणजे त्याच्या आई वडिलांचं न ऐकता तो बाहेरच्यांचं ऐकतो नेहमी. आणि त्याचा जेव्हा अँगर असतो तो आउट ऑफ कंट्रोल असतो. तोडफोड करेल, मारेल, त्याच्या वडिलांना मारेल. तर तो असं बघत नाही की माझे वडील 4 लोकांमध्ये आहे, डायरेक्ट नावाने आवाज देईल. तर आणि खूप डॉमिनेट करतो त्याच्या फादरला. व्हिडिओ कॉल करा, आत्ताच कुठे आहे मला दाखवा, आत्ताच घरी या. आणि नाही गेलं तर तो त्याच्या आईला मारेल. म्हणजे तो घरातल्यांना त्रास देतो फक्त. आणि अं, अ, जर अंघोळीला जायचं असेल तर कपडे काढून जाईल डायरेक्ट. त्याचे वडील सांगतात त्याला, "अरे मोठा झालाय आता." तर नाही म्हणतो. म्हणजे असं बिहेव करतो. तर याच्यासाठी काय रुब्रिक घ्यावं लागेल? तू सांग. तर मी एक रुब्रिक घेतलं होतं त्याच्यासाठी. डिल्युजन युरिनेट आउटसाइड द पॉट. म्हणजे फक्त तो बाहेरच्यांचा ऐकतो. आई वडिलांचा आणि स्वतःच्या घरातला ऐकत नाही. तर एकच रेमेडी आली होती सर, बेलाडोना. तर मी दिली आहे. पण पाहिजे तसा रिस्पॉन्स नाहीये. तेवढा तो डाउन नाही झाला अजून. Cruelty, brutality, inhumanity, family to her. Aversion, ओके. family members too. Yes. इव्हन त्याला बहिणी पण पाहिजे नाही. बहिणी पण त्याच्या म्हणजे घरी येत नाहीत, त्याच्या भीतीमुळे हॉस्टेललाच राहतात. आणि कुठे कोणासमोर पण Aversion, family हम्म. members and ओके. pleasantly to others. तर याच्यामध्ये हार्ट फॉर इन्फिरियर, सॉफ्ट फॉर सुपिरियर नाही आहे ना? ये भी हो सकता है, लेकिन वो साइकोटिक रूब्रिक हुआ ना. ओके. ये भी हो सकता है उसमें डिल्यूजन, डेंजर फ्रॉम फैमिली. हम्म. स्पॉइल्ड चिल्ड्रेन, ये भी हो सकता है. बहुत सारे आणि रूब्रिक्स है, बहुत अच्छा. सारे रूब्रिक्स है उसमें. कुठे पण म्हणजे घरामध्ये युरिन करेल. त्याला ते समजत नाहीये काही की कसं बिहेव करायचं. आणि बाहेरचे लोक म्हणतात त्याला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. क्रॉस हिस्ट्री घेतली तर एकदम चांगला राहतो बाहेर, कोणी म्हणणार नाही. येस, त्याला हे पण घेऊ शकते. एवर्जन फॅमिली मेंबर्स टू अँड इन्सॅनिटी बॉर्डर्स ऑन. एवर्जन फॅमिली मेंबर्स टू टॉक्स प्लेझेंटली टू अदर्स. है ना? खूप सारे रुब्रिक्स येतील त्याच्यामध्ये. अच्छा. पण ही सर केस काय होईल? वन साइडेड डिसीज होईल की म्हणजे काय पॅथॉलॉजी काय असेल याच्यामध्ये की तर म्हणजे इमोशनलच बघावं लागेल आपल्याला, म्हणजे माइंडलाच बघावं लागेल? हा काही डिझीज नाही कुठला, हम्म. सायकोसिस किंवा ऍक्च्युली याच्यामध्ये हे बघावं लागेल की लहानपणापासनं जेव्हापासनं जब से वो हुआ, जब से वो पैदा हुआ तब से फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहा, उस पे क्या क्या संस्कार हुए, किस तरह से संस्कार हुए, घर में क्या फैमिली में पेरेंट्स के कुछ झगड़े चलते थे क्या, किस तरह से उसे घर में इन्वायरमेंट मिला, या फिर उस पे क्या 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 बोलते हैं अपन, मतलब उसके ये जो बिलीफ्स है, उसकी ये जो थिंकिंग है ऐसी क्यों बनी. ओके. ये सब, हाँ, ये सब नरिशमेंट का पार्ट हो सकता है. बहुत से बच्चे इसलिए भी हो जाते हैं कि उनमें बहुत पेरेंटल कंट्रोल होता है ना, तो ये ऐसे बच्चे फिर कुछ दिन बाद ओसीडी में चले जाते हैं. तो हमें वो भी पार्ट उसमें देखना है, उसमें वो कवर करना है कि घर में जब से हुआ
तो घर का एटमॉस्फेयर उसे कैसा मिला, उसके मन के कुछ खिलाफ हुआ या फिर घर में कैसा एटमॉस्फेयर रहता था, सबके साथ कैसी, सबकी एक में के साथ कैसी रिलेशनशिप थी, लाइक दिस. अच्छा. तर त्याने कंट्रोलमध्ये केलंय सगळ्या फॅमिली मेंबरला. त्याच्या अंडर कंट्रोल आहे. मी म्हणेल तसंच करायचं सगळं. तर असं आणि ते का झालं हां, हां. है ना. त्याचे असे कोणते बिलीफ्स झाले ज्याच्यामुळे त्याच्यावर असे परिणाम झाले. आणि त्याला देवाला अजिबात विश्वास नाही. म्हणजे देवाला पायात नमस्कार करणार नाही, कुंकू लावू देणार नाही. तर ह्याच्यासाठी काही स्पेशल आपण घेऊ शकतो का? हा, बघ ना तिच्या अँटी सोशल और गॉड रिलेटेड रुब्रिक्स बघ. Your bed feels so hard. असं दिवशी त्याच्यामध्ये ते हे घेऊ शकते तू. ब्लॅस्फेमी. सेन्सिटिव्ह टू ॲग्रेएबल काहीतरी आहे ना असं सर. ऍग्रेबल थिंग्स. हा असं काहीतरी आहे ना एक रुब्रिक. तो टीका लावू देत नाही त्याला, त्याच्याने काय प्रॉब्लेम. माहिती असं ऐकलं. मॉरल morals want of moral affections antisocial or moral affections criminal disposition to become a without remorse, moral affection perversions, moral affections want of, ये भी रूब्रिक आएंगे उसमें. सर ब्लॅस्फेमी. ब्लास्फेमी. ब्लास्फेमी एक्चुअली उसके लिए रूब्रिक आपको कर्सिंग लेना पड़ेगा. कर्सिंग साइकोसिस में चले जाएगा. Yes. Okay. So. ओके सर. थँक यू. Yeah. So thank you very much. थैंक यू सर. Yes, thank you. कल हम very much sir. मिलेंगे. We will see tomorrow chapter number 13. Yes. So thank you very much. See you tomorrow. जब तक बाय बाय. सब खुश रहे, आनंदी रहे, हेल्दी रहे. थैंक यू.